next one. Shweta, come here. We'll have a picture. Ma'am, साथ में यहाँ. साथ में रुका. Shweta, हो जा. Ryan इधर look. Ryan, Shweta, हो जा. यहाँ पे भी. Center. Ryan इधर. यहाँ पे भी अभी. पहले मैम यहाँ पर. पहले यहाँ पे. पहले इधर. पहले सामने आप इधर दोनों. ओके मैम, थैंक यू. अंदर हो. Oh my God. उधर आइए ना. अंदर. यहाँ पे सेंटर में मैम. मैम थोड़ा इधर. मैम यहाँ पे. अभी दे रहा हूँ. थैंक यू. इधर आइए. थोड़ा राइट में आइए. और राइट. मुझे मत तेरा काम कर. चलिए वो चल चला. मत लेना. Thank you. Baru. Hi. I wish him all the very best. It's Dawn. I'm intrigued by the name Dawn Cinema. किस तरह का सिनेमा होगा, क्या होगा उसके अंदर, I don't know at the moment, but I'm very intrigued by the name Dawn. And इसीलिए मैं थोड़ा ऐसे कपड़े पहन के आई हूँ ताकि मैं भी लगूँ कि मैं अंडर कवर कुछ हूँ, ताकि मैं डॉन सिनेमा में देखूँ डॉन कौन है, फिर तो पकड़ के. Thank you so much, Baru. यहाँ पे देखिए सर एक बार. हाँ. लेफ्ट में. सर थोड़ा टर्न है सर. लेफ्ट में. लेफ्ट सर. इधर सर. सर लेफ्ट सर. थोड़ा लेफ्ट में यहाँ पर ये कलर में इधर भी. जो लेफ्ट सर. थैंक यू सर. या. It's actually good for, like, actors like us, because every day the talents are increasing, and it's important to have many OTTs because it's good, like, even for the work and for every artist, like, there are many actors, so of course the more the OTT is, like, the more opportunity we get. Yeah, thank you. सर और सर इधर ही. यहाँ पे बस परफेक्ट सर. यहाँ पे आपके राइट में. यहाँ पर सर. यहाँ पे सर. यहाँ पे लेफ्ट. सर थोड़ा लेफ्ट में. सर लेफ्ट. मैम लुक हियर. इधर आइए. और इधर आइए. सर लेफ्ट. हेलो मैम, स्टाइल. ओके. सर यहाँ पे मैम. हाँ ये भाई. यहाँ पे. You can also join. हाँ तो आप बोलो ना. Yeah. Gee, hi everybody. What would you like to, you're here for Dawn Cinema's launch today, the OTT platform. What would you like to see? एक और प्लेटफॉर्म आ रहा है और भी आएंगे. कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की तादाद को मद्देनज़र रखते हुए all are welcome, and I wish Dawn platform the very best, and खासकर अजीज़ ट्रिपी जो उसका शो लॉन्च हो रहा है, I wish him the very best. I would just like to congratulate Dawn Cinema, and अच्छी बात है एक और OTT आ रहा है. I hope इसके साथ और अच्छा काम भी आए. हाँ. जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म उतना ज़्यादा काम होगा. So we actors are happy कि yes, please keep coming. Okay, see you guys. Are you going to be? सर यहाँ पे.
सर यहाँ पे बसंत सर सर यहाँ पे सर लेफ्ट सर लेफ्ट खाली आप थैंक यू सर आइए बाइट करते हैं What wishes would you like to give for Dawn Cinemas? They're entering the market at just the right time. India now has grown exponentially. I think we have almost about 800 million plus actively engaged viewers on OTT, and I think total number of OTTs are almost about 60 plus. So they are entering the market at a very mature, market. And content is going to be playing a very big differentiator. So I wish, and I'm assuming, and I'm hopeful that Dawn Cinema will bring a lot of disruptive and disruptively engaging content. I wish them all the best. I'm aware of a couple of very interesting shows that they are launching their property with. One of them is a travel-based show by Aziz, my dear friend Aziz Z, which has been packaged very differently, and I'm assuming a lot of other content is going to be equally exciting. So I wish Dawn Cinema a wonderful journey in this incredibly exciting OTT space in the country. Thank you. यहाँ पे आइए यहाँ पे सर यहाँ पे सर अभी इधर सर यहाँ पे मैम इधर पे सर यहाँ पे इधर सर लेफ्ट में थैंक यू थैंक यू यहाँ पे मस्त एक नंबर लुक सेंटर सर सुपर सर यहाँ पे देखिए ना नंबर कैमरे पे लुक है, एक नंबर लुक सर यहाँ एक नंबर लुक है सर एक नंबर लुक यहाँ देखिए बहुत बढ़िया कैमरे में सर सेकंड कैसे हो सर एकदम बढ़िया थका के आए हैं, 18-19 घंटे शूट करके आए, गुम है किसी के प्यार में। अरे आज लास्ट डे था ना, गुम है किसी के प्यार में, बहुत हो गए ऑडियंस के, कवर नहीं था, स्ट्रेट ड्राइव। सर डॉन सिनेमा अब फिर से रिलॉन्च हो रहा है नए कंटेंट के साथ और नई सीरीज देखने, नए शोज आएंगे, क्या आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे सबसे पहले डॉन सिनेमा को? आई थिंक इट्स अमेजिंग, ऐसे competitive टाइम में इफ डॉन हैज़ कम इन द मार्केट, आई एम श्योर वो कुछ ऐसा अलग करेंगे या ऐसा कुछ धमाका करेंगे दैट इट गिव्स प्लेटफॉर्म्स अ नाइस हेल्दी कंपटीशन एंड ऑल्सो a lot of creators, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हों, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हों, उनके लिए एक मौका मिलेगा एक और प्लेटफॉर्म पे आने का। सो आई एम रियली हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। जी आप देख रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से रेट्रो लुक को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पीछे कोई राज आप कुछ बताना चाहेंगे? बड़ी अजीब सी बात आप ये कह रहे हो, क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से एक पुरानी पिक्चर थी स्टार कुमार गौरव की, मैं उसी को सुन रहा हूँ, पता नहीं क्या एक फुल रेट्रो मूड में हूँ। सो इट्स बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है एंड आई एन्जॉय, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ द स्टाइलिंग, इन टर्म्स ऑफ the feel, I think retro look वापस आ रहा है, the bell bottoms,
you know, the polka dots. You got it, yeah. And just the whole feel, the whole vibe, the whole Dawn vibe. Thank you so much. Thank you, man. Take care, guys. Done? Naman. Nice. Thank you. Thank you. अरे पीछे आ जाओ रे बाबा। लुकिया। Thank you. चलो बंद करो। पीछे by his hospitality venture, the Shisha Sky Lounge. Joining him is Mr. Mahmood Ali, a prominent figure in the entertainment industry, best known as the founder of Pen and Camera International, E-Cinema, and Dawn Cinema. With a visionary approach of film production and distribution, he has significantly influenced the landscape of Indian cinema. Together, by joining hands, they aim to revolutionize the streaming industry with Dawn Cinema. And now I would like to invite the visionaries themselves, Mr. on the stage. Where is Mr. Mahmood Ali? Now let me share some exciting insights about Dawn Cinema. This avant-garde platform boasts a vast collection of over 800 international feature films across 6 languages: English, Iranian, Turkish, Korean, Spanish and French. It also includes a rich selection of 300 South Indian films, along with
regional content in Punjabi, Assamese, Bhojpuri and Mid-form. This feature seamlessly integrates traditional TV viewing with the convenience of on-demand streaming. Dawn Cinema truly stands out with its unique combination of international films, web series, animation and live TV. Accessible in all platforms including the iOS and Android devices. I would like to, as we celebrate this monumental launch of Dawn Cinema, this collaboration does not end only in India but covers UAE and the entire GCC region. I am thrilled to announce the two exciting new flagship shows under Dawn Cinema, Trippy Traveller by Aziz and one of the most buzzing and mega reality show called The Talker House, which will house trending and interesting one of the top influencers of our country. Aziz is a renowned director who has directed more than 200 music videos, 4 feature films, web series, including his first Indo-Arab web series called The Antique Shop, and many ad films. This show is produced by a gorgeous Henna Das Gupta, a former actress and now a founder of the Pink Drop Entertainment. And a lovely producer, Henna Das Gupta, on the stage and share their vision along with some of our gorgeous celebrity guests. I'm just going to pass the mic and you can say a few words. Okay, good evening everyone. So we are starting this travel show called Trippy Travellers, and the uniqueness of this show is going to be that it's going to be targeting very unique locations, first of all, which is going to make it stand apart from the other travel shows. And secondly, we're going to have some cameo appearances, some appearances from famous personalities in the show, again, which is going to make it stand apart from the other travel shows. And it's going to be very fun-filled show, very different than the other shows. So this is what we're looking at. Aziz would like to add something to this. Hello, good evening, ladies and gentlemen. It's amazing to see all you lovely people over here. I love you guys. Please excuse my slurring. I think I'm a little drunk, which I always am, every single day. But yeah, please excuse me for this. Okay, so let me tell you about Trippy Traveller. This has been a show which I've been wanting to do it for a very, very long time. And finally, Mr. Mohammad Fasi, he made it come true. And Mr. Mahmood Ali, they finally sanctioned the show. They thought it was worth it, and we're going to have it on the OTT platform, Dawn Cinema. It's a very, very different kind of show. I know that is what everybody says, so I'm going to use the same cliched line. My show is very different from others, guys. Very different. Okay? Yeah, it is. Thank you very much. Okay. From the person who was one of the hosts of the show. So we have a lot of celebrities coming in to different locations, to different places where no man has gone before. They're going to do things that nobody else has done. They're going to show things that people wouldn't want to see. Exactly. So that's what the whole show is all about. I want to call on stage right now the people who are involved in Trippy Traveller. Shweta Khanduri, who's right here right now, she was one of those. Mr. Rehan Shah, the man who dressed these girls up, or whatever little he gave them to wear. But yeah, he's the man who did that. And then I have Eliza Sarkar. Eliza is here. Eliza, stop drinking and come here. Yep. So he's one of the directors of the show and the cinematographer.
So yeah, I want you guys to watch this show because it's not going to be like the normal travel shows that happen. You're going to be shocked. It's a wild and wacky show. I hope all of you all follow it, and I hope you go to the destinations that we are going to do. We are going to be traveling all over the world in the next 1 or 2 years, and only Dawn Cinema is going to make this happen possible. Thank you everybody for this. Thank you very much. Thank you. Good evening everyone, and what do I say? We're so excited because we're such a lovely team. We went, I think we were the first one to go on the floor to start shooting, and with Aziz has been, I think years back we have been shooting together, and now Fasi Bhai and Mahmood ji getting on board. Okay, no bhai. Can people stop calling them Fasi Bhai and Mahmood Bhai? Not calling them bhai, but the next episode se No, not calling them bhai. But trust me, it's one of the most amazing thing that we have shot. Not the regular one, क्योंकि रेहान है और हमें ऐसा trippy style किया है रेहान ने कि मैं क्या बताऊँ. And what do I say? When we say it's different, it is different क्योंकि हमारे looks बहुत different है, place बहुत different है. We started with Manala. और मनाला जितना मैं बोलूँ उतना कम है, किस चीज़ के लिए वो जाना चाहता है सबको पता है. I think since the start to the end I'm still bad with the name of the place. You are still tripping. I'm still tripping with Trippy Travelers and Malana and what do we do? And for the first time Aziz did trek. He trekked, and I made him trek, and it was commendable. I'm so proud of you. 2 hours we had to trek to reach that place, and you have to see that episode because the story behind it is amazing. You have to see him trekking because you might have seen me trekking to Mount Everest, but trekking for him is a very, very different task. So yes. But I'm so proud of you, and thank you guys for making me part of this beautiful show and showing me a different part. Though I'm Pahari, but ये part मैं नहीं गई थी, और thanks to Aziz and Mohammed Bhai and Mohammed ji and Fasi ji that I could go to this place and explore it, and many more places to come. So Rehan, thank you for styling me so beautifully, and he will say how he felt. Well, hello everyone. Well, I got a call middle of the night, someone very close to my heart from his washroom, and it was Mohammed Aziz. Abdul Aziz, but I call him Mohammed also. So he was like, Rehan, finally this is the thing which I really want you to do because you can really give what I wanted. Because I'm known for extra clothing, extra things. So thank you so much Aziz, thank you very much Fasi ji, Fasi Bhai for me because I've been knowing him since many years. Mr. Mahmood ji and Dawn Cinema and my love Sanobar, I love you. So it was wonderful working, and I think we're gonna rock. And Aziz, you did a wonderful, whatever little what we have seen in the trailer, it's amazing, and I'm so looking forward for many more episodes. Thank you so much. सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग यहाँ तक आए. मेरे कुछ दोस्त दिल्ली से, कुछ दोस्त मद्रास से, हैदराबाद से, बेंगलुरु से आए हैं. इन सबका और मीडिया को शुक्रिया. इतना देर वेट करने के लिए आप लोग इतना वेट किया, आप लोगों ने अपना सब्र दिखाया. थैंक यू सो मच. और जो टॉकर हाउस है, ये हमारा वो घोड़ा है जो पूरे डॉन सिनेमा की रथ को लेके चला था पहले, और अब भी वो चलने वाला है, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ. थैंक्स टू भूमिका कलिता. भूमिका ने जो क्रिएटिवली काम किया इसके ऊपर, आई एम रियली थैंक्स टू हर, एंड थैंक्स टू अमान ने जिस तरीके की कास्टिंग ला के दी हमें. और डेफिनेटली ये शो को डायरेक्ट करने के लिए कोई पागल डायरेक्टर चाहिए था, तो वो पागल डायरेक्टर हम सबका चाहता. एक बोलने की ज़रूरत नहीं है इसकी, तो अजीज जी ऑन द रॉक. तो थैंक यू एवरीवन, सपोर्ट अस, एंड इन द एंड आई विल से प्लीज keep watching Dawn Cinema. Hello
thank you for coming. It's a big day for Dawn Cinema. Dawn Cinema's come back actually with a big bang. So thank you everyone for coming. And yeah, टॉकर्स हाउस के बारे में हम क्या बोले, टॉकर्स हाउस ने पहले ही पूरे इंडस्ट्री को हिला दिया था, लेकिन इस बार और डबल एनर्जी के साथ टॉकर्स हाउस को हिलाने वाला है. सो यार जस्ट कीप वॉचिंग डॉन सिनेमा, दैट्स ऑल आई कैन से. और हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं इस टॉकर्स हाउस को डायरेक्ट करने के लिए, सो वी विल ऐड ऑन हिज ओन एनर्जी टू मेक इट different kind of bang. So yeah, we all are looking forward and we all will be bringing a very nice show to you all. Thank you. जब टॉकर हाउस हुआ था, we are coming up with a big bang again, and the people who are joining them is very different like categories. बोलो वो फन है, मस्ती है, फाइट है, कुछ लोग सीरियस है, कुछ लोग मस्ती वाले हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा चुप वाले भी होंगे. बट वो पता चलेगा जब अंदर जाएंगे वो लोग, क्योंकि बाहर सब अच्छे ही रहते हैं, अंदर जाके लोग पलट जाते हैं. तो लेट्स सी कौन कितना कास्टिंग जितना हुआ है वो कितना अच्छा अंदर प्रेजेंट करता है अपने आप को. एंड होप फॉर द बेस्ट. एंड फेसेस भी बहुत जल्दी रिवील भी हो गए. वी विल बी हैविंग अ लॉन्च डेट फॉर द रिवील. So stay tuned for the Talker House and big time. Best of luck for Talker House. Okay, I'm back again. I'm very excited to be part of the Talker House now. This is going to be a very addictive show, and I'm sure the audience and the people who are going to be involved inside is going to be a very crazy show. So I just want all of you guys to and hoping for the best. Thank you everybody for being here. Thank you very much. आजकल छाए हुए हर जगह पे, तो हम इनके साथ में लेकर आ रहे एक शो लीगल जोन, जो अपने आप में बिल्कुल अलग शो है. तो मैं चाहूँगा प्लीज वेलकम करें. हेलो एवरीवन. महमूद भाई जो है वो आप जो जानते रहोगे और जो नहीं जानते रहोगे, उनका अपना एक ब्रांड है, खुद एक नाम से एक ब्रांड है. और जो मेहनत और जो मुशक्कत करके आज वो जो प्लेटफॉर्म पे जो खड़े हैं, वो आज आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है हो रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या मेहनत है उनकी और क्या हार्डवर्क है, वो सिर्फ वो जानते हैं और उनसे जो जुड़े हुए लोग वो जानते हैं. तो बेस्ट विशेष है डॉन सिनेमा को और महमूद अली को, और ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे. और कुछ अनाउंसमेंट तो महमूद भाई खुद ही करेंगे. जो लीगल जोन है, आप अली काशिफ को जानते होंगे, इनके कितने कंट्रोवर्शियल केसेस रहे हैं. तो हम इनको सबको इकट्ठा करके एक शो लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है लीगल जोन, और हम इस संडे से हम उसका शूट शुरू कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. हेलो. अभी आप लोग है ना ये फंक्शन के बाद प्लीज़ डॉन सिनेमा लोड करिए, डाउनलोड करिए और वायरल करिए. थैंक यू वेरी मच.